नमस्कार दोस्तों। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और वहीं कोरोना की तीसरी लहर आने की लगातार चेतावनी दी जा रही है। इस बीच में एक राहत की खबर चेन्नई से आई है, जहां पर एपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्लेवीरा एक एंटीवायरल हर्बल फॉर्मुलेशन लॉन्च किया गया है। क्लेवीरा एंटीवायरल औषधि को भारत सरकार के नियामक ने कोरोना संक्रमण के हल्के मध्यम सहायक इलाज के लिए प्रमाणित भी कर दिया गया है और ये दवाई किडनी और लीवर के मरीजों के लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज इसकी जानकारी एपेक्स लेबोरेटरी के इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर मिस्टर सी आर्थर पाल ने दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एंटी हर्बल फॉर्मुलेशन जाना जाता मरीजों के लिए काम करेगा और कोविड के दौरान जो हल्के लक्षण हैं उनमें पूरी तरीके से प्रभावी है। चूँकि ये हर्बल है, इसलिए इसे फ्रंटलाइन वर्कर और रोगियों की देखभाल करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी रोग निरोधी इलाज के तौर पर वो भी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इंटरनेशनल मैनेजर मिस्टर सी आर्थर पाल से, जिन्होंने अंग्रेजी में ये जानकारी दी है और हिंदी में ये पूरी खबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। जो इच्छुक हों वो डिस्क्रिप्शन में खबर पढ़ सकते हैं। Good morning. I am Arthur Paul and I represent Apex Laboratories Private Limited. We are extremely happy to announce that Clevira has been approved by Government of India, Ministry of Ayush for the treatment of mild to moderate COVID-19 as a supportive measure. Clevira from the house of Apex Laboratories Private Limited, and Apex is one of the top 50 Indian pharmaceutical companies having a legacy of more than 4 decades and known for its flagship brands such as Zingovit, P500 and P650. Clevira is a polyherbal antiviral Ayush preparation available in India market since 2017. As a part of repurposing Clevira for COVID-19, a phase 3 clinical trial has been carried out in one of the leading allopathic government medical college hospitals in Chennai, and the reports were very promising. The clinical trial reports were tabled before Ministry of Ayush in July 2020, and therein series of scrutiny at Ministry of Ayush, CCRAS and Interdisciplinary Technical Review Committee, finally Clevira has been approved for the treatment of mild to moderate COVID-19 cases as a supportive measure in the month of April 2021. When Clevira is given along with standard of care treatment, 86% of patients recovered on the 5th day, and on 10th day 100% patients were recovered completely. The mean recovery from all the signs and symptoms were noticed in 4 days, and there are no disease progression reported in the treatment group. Moreover, there are significant improvement in WBC count, platelet and lymphocyte counts, and there are no alteration in the kidney and liver profiles. That means there are no significant adverse drug reactions noticed, and Clevira is safe on kidney and liver parameters. Clevira has excellent compliance of oral dosage convenience. Clevira tablet is 1 tablet twice daily dosing after food for 14 days as a treatment. Clevira is available as both syrup and tablet. Clevira is safe from the age group of children above 2 years. Clevira is contraindicated in pregnancy but can be safely prescribed along with other co-prescribed drugs, and Clevira is also safe for people with other comorbidities. There are 6 clinical trials have been carried out so far on Clevira for its safety and efficacy. The phytochemicals which are present in Clevira is very effective against the proteins